आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। Half of India's GDP comes from the sweat and toil of 42 crore workers in the unorganized sector, working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, BD workers, handloom, leather, numerous other industries. घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं. We must provide them a comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in addition to the health coverage provided under Ayushman Bharat and life and disability coverage provided under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. On a monthly contribution of a small affordable amount during their working age. An unorganized sector worker joining the pension yojana at the age of 29 years will only have to contribute 100 rupees per month till he attains the age of 60 years. A worker joining the pension yojana at 18 years of age will only have to contribute 55 rupees per month. सरकार इतना ही पैसा अपनी तरफ से उसमें जोड़ेगी. The government will contribute an equal matching share in the pension account of the worker every month. हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी, लेबरर, वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा और अगले 5 साल में शायद ये विश्व सबसे बड़ी के रूप में उभर जाएगा. इसके लिए भी इसी साल हमने स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 500 करोड़ रुपए इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर हम देने के लिए तैयार हैं. और अधिक राशि लगेगी तो और अधिक राशि भी इसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी. The scheme will also be implemented, as I said, from the current year itself.